नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसा लग रहा है दोस्तों? थोड़ा नूनेज नूनेज मानस नूनेज सुन के ना मेरे को एंटोनियो नूनेज याद आता है। माइकल ओवन का ट्रांसफर याद है रियल मैड्रिड के साथ? हाँ, वो भी नंबर 10 की जर्सी पहनता था। माइकल ओवन का ट्रांसफर याद है रियल मैड्रिड के साथ? भाई ये तो एकदम मतलब साइंस फिक्शन ये हो गया सॉरी, भाई। पीछे पीछे मेरा वो अपना ही वीडियो ऑन था इधर। हाँ, तो यूट्यूब मैं बोल रहा हूँ कि माइकल ओवन नंबर 10 जर्सी पहनता था, उसका ट्रांसफर हुआ था और उसके बाद एक नूनेज नाम का प्लेयर आया था। हाँ, सादियो माने भी नंबर 10 जर्सी पहनता है, बट आई जस्ट होप ये नूनेज का हाल वो नूनेज वाला नहीं हो। अगर ये आता है तो पहली बात। before we get started guys, before we jump on the bandwagon, before सब लोग एक्साइट हो जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं मैनस इन द मॉन्क पे कि ये साइनिंग हो गया है। हो गई है जैसे आयुष लाला बोल रहे हैं कि हो गया है नासिक का न्यूनेस। भाई, पब्लिक एकदम बाजीराव सुपर फास्ट। हाँ, सो हम ये नहीं कह रहे हैं कि साइन हो गया है या ऑन द वर्ज है। लाला जी तो बहुत खुश हैं, बट रिपोर्ट्स कमिंग इन निधि, रिपोर्ट्स कमिंग इन टुडे दैट apparently the first Nidhi, first things first, the player wants to join us, so I think वो काफी इंटरेस्टिंग है। सब लोग ये बोल रहे हैं कि the player is interested in the project और क्लॉप ने बात कर लिया। हाँ बिल्कुल। यार क्यों नहीं, प्लेयर तो इंटरेस्टेड है ही और मतलब होना भी चाहिए यार। इट्स फैंटास्टिक प्रोजेक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ। देखते हैं, मतलब 80 मिलियन प्लस 80 मिलियन का बिड हमने आज तक अपने जिंदगी में कभी तक बिड तक नहीं किया है। तो 80 मिलियन सुन के ऐसा मतलब मेरी सिलेक्शन हो गई वाला फीलिंग आ रहा है। लेकिन लेकिन देखते हैं क्या होता है। अपेरेंटली देखते हैं कि देयर आर सम रिपोर्ट्स दैट से दैट इट इज लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। मैंने आज एक रिपोर्ट पढ़ा था कि डार्विन बेनिफिका will try tooth and nail to either stop him or or try to get the best money out of for him possible because इन्होंने पता नहीं, मतलब इसके पहले नूनेज आई थिंक ही वाज अल्मीरिया, आई थिंक ही यूज्ड टू प्ले फॉर अल्मीरिया, जहां पे दे हैड पेड 24 मिलियन फॉर हिम व्हिच वाज देयर रिकॉर्ड। तो उन्होंने भी काफी पैसा देके खरीदा था इसको। तो देखते हैं अभी। आई थिंक वी शुड होल्ड आवर हॉर्सेस अ लिटिल बिट। या बिफोर एवरीवन, आई टोटली एग्री विद यू निधि, बिफोर एवरीवन गेट्स वेरी एक्साइटेड, देखो एक बात तो है कि देयर आर अदर क्लब्स व्हिच आर इंटरेस्टेड, other clubs being Manchester United and Atletico Madrid. थैंक यू Uh, संकेत। thank you, Sanket. You are a Real Madrid supporter. Your support still is very surprising and very humbling. So thank you. We really appreciate it. सीरियसली Uh, संकेत हैज second, बीन वन ऑफ आवर रेगुलर्स। yes, अभी Sanket. उसको हम लोग एक दिन ऑनररी, हाँ संकेत को तो हम लोग ऑनररी स्काउजर बोल सकते हैं अनलेस वी आर प्लेइंग रियल मैड्रिड। हम मेरे को तो लगता है वो लिवरपूल को ही सपोर्ट करता रहेगा। खुश तो बहुत हो गए तुम, चाउमीनी तो साइन कर लिया तुमने 100 मिलियन हाँ, में, एनीवे। चाउमीन बट चाउमीन मिल गया आपको एक प्लेट। हाँ, कामाविंगा चाउमीनी, एनीवे बहुत इंटरेस्टिंग भाई होगा। बट निधि निधि, कमिंग बैक टू द टॉपिक, before, I mean, again, we don't want to get very excited too early, but या apparently Atletico Madrid and Manchester United are the two teams that are interested in him as well. या रियलिटी ये है कि अगर बिडिंग वॉर होगा तो मुझे थोड़ा स्केप्टिसिज्म हो सकता है, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलवेज हैव द मनी, मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा नहीं, will थोड़ा always नहीं, pay the higher wage, will always pay the थोड़ा higher नहीं, wage. काफी काफी बिडिंग वॉर का काफी स्ट्रेस है। बट वही है, देख यार, हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस देख, लुइस डियाज के लिए भी स्पर्स वर रेडी टू पे मोर मनी मोर वेजेस, बट ही रियली वांटेड टू कम टू लिवरपूल ओनली। रीजन क्या है? क्लॉप, राइट। हिस्ट्री तो है ही यार, ऐसा नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास हिस्ट्री नहीं है। बट अभी करंट रीजन क्या है कि क्लॉप
तो देखते हैं अभी, डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं है यार। एके निधि भाई एक वीडियो बना, हाँ इसके यार, ये ना हम इस तरह के वीडियोस हमने प्लान किए हैं, बनाएंगे। थोड़ा सा आप हमको टाइम दो, अभी जस्ट सीजन खत्म हुआ है, वी आर जस्ट स्ट्रक्चरिंग आवर थॉट्स। आपको इस सीजन से यू विल नॉट गेट टू सी ओनली मैच रिलेटेड वीडियोस, यू विल गेट टू सी अदर स्टफ आल्सो। आप थोड़ा थोड़ा टाइम दो हमको, हम जरूर बनाएंगे। I could be pronouncing this wrong, but apparently the most respected journalist, one of the most respected journalists in Portuguese football. Uh, exactly, exactly. And Lalaji, so Pedro is his name. Pedro something. He is stating that we have officially made a bid of 80 million plus 20 million add-ons for officially submitted according to him. And see, I don't understand Portuguese very at all. There is a handshake shown over there, so I don't know what that तो suggests. मेरे को एक बार जस्ट पिंग मी द ट्वीट ना, I'll display it here. Yeah, okay. uh, लाला ही दे देगा ना, लाला भी उसी को रेफर कर रहा है, आई हाँ थिंक. मतलब जो भी कर सकता है मेरे को व्हाट्सएप कर दो, तू या लाला, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा उसको। बाय द वे वी आर लीडिंग 1-0 अगेंस्ट कंबोडिया, इंडिया इज प्लेइंग बॉयज। आर वी स्टिल लीडिंग मानस? मेरा टीवी तो उधर We चल are रहा है still तो। leading. I'm still watching the game over here, so it's a very interesting day. AFC या Asian qualifier भी चल रहा है, Asian Cup qualifier. Nidhi, I've sent you the tweet, but yeah. And one more thing, Nidhi, we have to think about now a 4-2-3-1 very seriously. If we break the bank for a striker, हाँ if we are breaking the bank for a striker, which means things are going to change a bit. Which gets me very excited as well, Nidhi, because अगर हमारा रिकॉर्ड साइनिंग स्ट्राइकर होगा, मैं एक और ट्वीट देख रहा था which really fascinated me. uh, are you putting that up, Nidhi, by the way? आई एम जस्ट, Yeah, तू कर दे. Amazon के कुछ टैब्स खुले थे जो मैं बंद कर रहा था। अच्छा, उसको अभी हम Amazon बोलते हैं. नहीं वो तो वीपीएन पे चलता है। इंडियन गवर्नमेंट ने रोक दिया भाई, क्या कर सकते हैं। सो इट्स पेड्रो सेपल्वेदा Yeah, says 100 million, 80 million plus 20 in goals, there is a handshake and there is an hourglass, which means कुछ waiting game चल रहा है। It could also mean it's a matter of time, yeah. I don't know. Exactly. So he apparently is one of the most respected journalists of Portuguese league. Nidhi, but if I have your attention and the attention of everyone involved over here, the last strikers signed from Liverpool, okay? Ricky Lambert 2014, Divock Origi 2014, Balotelli 2014, Danny Ings 2015, Benteke 2015, Solanke 2017, free transfer. This is the first striker we are signing in 5 years. Apart from Solanke, which is under the Klopp era. Okay, और वो भी हाँ फ्री ट्रांसफर था, ट्राइब्यूनल में ट्रिब्यूनल, गया था, whatever. ट्रिब्यूनल, हाँ The point is, Nidhi, this is the first striker that Jurgen Klopp will go for officially, out and out striker, and we are making a club record bid apparently. So, by which goes to show things are evolving. We've signed Fabio Carvalho as well in the same transfer window, and I saw your video with Ritvik, and Ritvik was saying that he is used to playing behind that striker. नंबर 10 इन द होल वाला। Yeah, so Nidhi, it is pointing towards in some games we could play a 4-2-3-1. 4-2-3-1 यार, मैं तो इनफैक्ट अगर तेरे को याद है, जब हमने जब लास्ट टीम किया था तो मैंने तेरे को बोला था ना, माने का रिप्लेसमेंट हम विंगर नहीं लाएंगे। मैंने तो बोला था कि मेरे को लगता है स्ट्राइकर ही आएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यू नो, इफ अगर अगर तू देखेगा तो जैसे मिडफील्डर्स हम साइन कर रहे हैं, हाँ. फाबियो कार्वालियो है, या जिस तरह के प्लेयर्स से हम लिंक हो रहे हैं, वो जिस तरह के प्लेयर्स हैं, वो मिडफील्ड थोड़ा अलग होता है। तो बेसिकली आई थिंक वी आर गोइंग फॉर मे बी 4-2-3-1 और मे बी अटैक्स थ्रू द मिडिल। काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्लॉप
has worked with a lot of strikers, made them very good. Robert Lewandowski, Aubameyang, right? So he can work with strikers. तो देखते हैं क्या होने But वाला है. at but the interesting thing is, Nidhi, at Liverpool it has not happened yet. तू Not अगर at देखेगा, Liverpool. बेंटेके, we had Benteke, we decided, okay, Klopp doesn't need him, we got rid of Benteke. Origi was never a first choice under Jurgen Klopp. Daniel Sturridge was never a first choice under Jurgen Klopp. So which just goes to show, अगर Klopp एक striker sign कर रहा है और मतलब record fee pay कर रहा है, so I feel something is evolving, something different हाँ, is going to give. 100%. 120%. Like, I mean, which makes me very excited. भाई मैं ये ट्वीट देखा कि 5 साल में हमने स्ट्राइकर साइन नहीं किया है और अभी हम लोग स्ट्राइकर साइन कर रहे हैं. सो एंड ऑल्सो निधि, लाइक विच ऑल्सो मेक्स मी फील, यू नो, लाइक देख हम लोग लीग ड्रॉज बहुत किए थे हम लोग ने लीग में, इफ यू हाँ, रिमेम्बर. और हमको एक चाहिए था कि एक बंदा जो मतलब तोड़ के बस मार दे. यार वाइबर, मैं तो पर्सनली उतना मतलब फेब्रिजियो पे मेरे को उतना भरोसा नहीं है, बट आई थिंक ही इज मोर पॉपुलर. सो इज मानस, तो एक क्वेश्चन ले, मैं एक ईमेल कर रहा हूँ. हाँ, डालना क्वेश्चन. वही वी क्वेश्चन आर नहीं, it's a point डिस्कसिंग of मुदस्सर discussion. की. We have played with Jota, we've played with Salah at times, Mane, Origi at times, Sturridge under Jurgen Klopp, Benteke in the early days. But हमने ये देखा नहीं है कि कभी out and out striker has been playing for Liverpool under Jurgen Klopp. If we break the bank for Nunez, record fee pay कर रहे हैं, so I mean we will not pay 80 plus 20 for him to, you know, like be on the bench for sure. So I'm not saying ये end of all sign होगा, but it certainly makes me feel कि 4-2-3-1 is something we can look forward to more this season, especially with the signing of Fabio Carvalho as well, because Ritvik और निधि ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि how Fabio Carvalho works really well in that hole, in that space. And वो space में is just not Fabio Carvalho. We can play probably Harvey Elliott as well. We can play Firmino as well. So we have the options. We have the personnel, the players to play in that role if we decide to switch to a 4-2-3-1. Uh, I won't say Curtis, but certainly Elliott, Firmino and Carvalho can play in that hole with your Luis Diaz or Jota, or I mean, of course, Salah as well. Considering Salah signs a new deal, let's hope Salah signs a new deal. So, I mean, Nunez, Jota slash Diaz, Salah, Carvalho slash Firmino slash Elliott with our Thiago and Fabinho slash Henderson slash Keita. So it's exciting. It's very exciting. See, we are all speculating at the moment if this signing actually happens. It will take a lot of time because either bidding war चल रही है और Bayern Munich bargaining war कर रहा है हमारे साथ with Sadio Mane. सादियो माने, निधि तू क्या बोलते है सादियो माने का जो चल रहा है फिलहाल? भाई वो लोग ने जो टर्म्स एंड कंडीशन डाले कि मल्टीपल चैंपियंस लीग, बैलन डोर्स एंड ऑल, लेवेंडोव्स्की 600 गोल मारने के बाद भी बैलन डोर नहीं जीता. भाई वो तो मतलब कुछ अलग ही मजाक कर रहा है. मतलब दैट्स लाइक, पता नहीं यार, मतलब एकदम वो अलग लेवल. क्या बोलूं उसको, इतना कैसा, मतलब 3 बैलन डोर एक एक साथ लगातार. मतलब दे आर जस्ट टेकिंग द पिस, आई फील. Yeah, they're not taking the piss. I think, like, I genuinely feel Bayern as a club. I really respect Bayern as a club a lot. Huh, by the Of way, guys, course. I mean, they are a brilliant club. I think the record signing is Sane from Manchester City. I could be wrong. They never like splash the Flash cash the for cash. them. Yeah. So, I mean, we hold Sadio Mane at 42 odd million. So, देखना पड़ेगा क्या होगा. हाँ. Illicit Mob is asking, why can't we sign Richarlison? It's a dead derby anyway, because Richarlison is not fit to lace Liverpool youth players' boots. That's the reality. No, but his behavior aside, he's just not good enough, man. He's just not good enough.
दैट्स द रियलिटी अबाउट रिचार्लिसन। रिचार्लिसन ने कितने गोल मारे हैं अभी तक, उसके सब सब मिला के मैंने कुछ पढ़ा था यार। रिचार्लिसन जैसे प्लेयर क्यों चाहिए यार आपको, मतलब यू वांट टू गो बैक टू 2015 और व्हाट? आई थिंक वो मजाक ही कर रहा होगा। मे बी। हाँ। या अपेरेंटली वी साइंड अ बैकअप फॉर ट्रेंट इज वेल, निधि। या जस्ट गिव मी क्या? 2 मिनट्स मानस टू डिस्कस करने, मेरे को 2 मिनट में ये ईमेल खत्म हो जाएगा। आराम से कर ले। Calvin Ramsey as a Trent का backup and Nunez in front will be a dream for next season. I think Nish, you're very correct because I think Calvin Ramsey has been, it's not been officially declared, but ऐसे लग रहा है कि 4 million में Aberdeen से we have signed him. He's 18 if I'm not mistaken. He's gonna be the backup for Trent, which means Nico Williams will be moved on to Fulham. We'll get a bit of cash for that. 100। Apparently, we are also letting go of Nat Phillips. We'll get a bit of cash for that. Apparently, we want to give Joe Gomez a new deal. We want to give Naby Keita a new deal. We want to give Mo Salah a new deal. So, if things work out, I think Fabio Carvalho, Calvin Ramsey, and Nunez, if Nunez happens, will be a transfer window done when it comes to incomings. We might have the likes of Nico Williams, Nat Phillips, Chamberlain, Menamino leaving so that we generate the cash to get the signing of Nunez. And if we are able to hold on to longer contracts to Naby Keita, Mo Salah, and Gomez, I think we're done. I think our transfer window is done over there. It will be a solid transfer window, getting a young midfielder, a young right back, and a young striker. So, एंड आई एम आल्सो lot डन विद माय ईमेल। thanks, Didi, because अकेले बात कर करके थक गया था मैं. सॉरी सॉरी सॉरी। No stress. काफी कमेंट्स मिस हुए हैं, आई एम सॉरी Yeah, गाइस। sorry guys, because Nidhi was a little occupied. He handles the comments, so you can get your comments in once again. हाँ, We'll take them. आप फिर से डाल दो, हम लोग विल पिक इट अप। Almost half time, guys. Almost half time. India is leading 1-0 against Cambodia, and Cambodia is a country जो निधि और मैं travel भी कर चुके हैं. काफी अच्छी country. Yes, निधि. बहुत बहुत वन ऑफ माय फेवरेट कंट्रीज। डोंट यू थिंक वी शुड गो बिग इन मिडफील्ड इंस्टेड ऑफ नूनेज? नूनेज इज गुड बट नॉट श्योर वेयर वी शुड स्प्लैश द कैश। यार देखो विवान, एक दो चीजें हैं। एक तो we needed we needs, if Mane is leaving, we need someone in attack, ये तो बात पक्की है, ठीक है। Jota is not, maybe um, we are trying to, Jota is not exactly a striker, right? We may be trying to change the way we play, तो वो एक रीजन है। मिडफील्ड में भी मतलब what says that we won't do anything in midfield? Maybe we go for midfield signings as well। एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा, देखो यार, अभी हम लोग ने पिछली बार जब स्ट्रीम किया था तो एफएसजी काफी हुआ था। ये हर बार ये हमारे ओनर्स प्रूव करते हैं कि जब कोई प्लेयर क्लॉप को चाहिए होता है, they are not scared of, not reluctant to spend the money। भाई अगर Chouamini, 80 million plus 20 का बिड डाल रहे हैं, right? So Chouamini के लिए भी हम लोग ने, we were ready to pay the money which Monaco was asking। उसको रियल मैड्रिड जाना था तो हम कुछ नहीं कर सकते, right? तो मतलब this conversation about FSG sometimes it gets really overboard। Personally मैंने वो स्ट्रीम में भी बोला था कि I think our owners are pretty sorted that way। देखो विवान, just to add to what Nidhi is saying, don't you think it depends? It depends what do you think big is at the moment. See, James Miller signed a new deal. We have Henderson, we have Fabinho, we have Thiago, we have got Curtis, we got Elliot. We got 6 players at the moment over there, and Fabio Carvalho is number 7. It depends on how we are looking to play next season. Which midfielder? Give me a name. Give me a name, Joe. You think we should be targeting? Honestly, like
Chouameni, I understand, but Chouameni, we made a bid, but apparently he wants to join Real, and he has joined Real, जैसे निधि ने बोला. ऐसा नहीं कि हम टारगेट नहीं कर रहे हैं. Not the fact that we are going to make a club record signing is, this is not the time to say that, oh, we should have targeted the midfield. If Mane is leaving, we are showing intent now, and I mean, I'm not saying it is going to happen. I'm still not saying we're going to sign Nunez, but agar Yeah. hoga, we should appreciate the fact that we are getting someone. And Nidhi, if you remember, Klopp also said, oh, Nunez, apart from being such a good-looking man, he is such a good player as well. Very rarely does Klopp say such things, Like, I think we knew that Klopp was interested. Do you think, Nidhi, in hindsight, Klopp was interested in Nunez जब उसने वो comment मारा था? देखो, मैं तुमको बताता हूँ. When we played Salzburg, Minamino had a really good game against us. Yeah. उसने जब गोल मारा था तो क्लॉप वाज स्माइलिंग. जब बेंफिका ने गोल मारा था तो भी क्लॉप वाज स्माइलिंग. Smiling. Yeah. ठीक है. वो obviously he looks at, I mean every manager does, not just Klopp, Yeah. but I think that he's definitely interested in Nunez. I mean, purely because of the fact that talented player है, young player है, तो interest तो होगा ही. तो आई थिंक डेफिनेटली इंटरेस्टेड है. अगर इतनी बात आगे बढ़ी है अभी जो बोल रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो है ही, क्लॉप के तरफ से तो आया ही है. मानस तो अटका है क्या? नहीं नहीं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि क्या है क्या हाँ. नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं. एनकुंकू फॉर न्यूनेस. एंड I feel कुंकू फॉर नूनेस, दोनों बहुत नहीं अलग टाइप नहीं, के I प्लेयर हैं. think this banda is just having fun. So let him हाँ. have fun. हाँ, वो मजाक कर रहे हैं. Thank you for spamming our comments, brother. आयुष I राणा really क्या don't बोल रहे want Salah to leave, but if hypothetically let's assume he leaves, we don't have a backup for him. I don't want 2021 dead season again. बट हो, मतलब देखते हैं ना, बात हो रही है ना, मतलब ऑब्वियसली नन ऑफ अस वांट साला टू लीव. तो देखते हैं. यार, मतलब मेरे को तो बहुत हंसी आती है जब भी हम लोग 80 मिलियन भी अगर डाल रहे हैं प्लेयर के लिए जो योगन क्लॉप को पसंद है और चाहिए, उसमें भी पब्लिक अगर क्रिप कर रही है तो क्या बोले अभी, मतलब. कुछ नहीं बोल सकते अभी. Shrinjoy Days saying Bellingham next year. Listen भाई लोग, पहले ये ट्रांसफर विंडो तो नेगोशिएट पहले कर ले. इसको तो हो जाने दो अभी, ये मतलब अभी हुआ नहीं है. देख, मैं तेरे को मैं एक कहानी सुनाता हूँ तुम लोग को, थोड़ा सा स्टोरी टाइम. एक ना मेरा दोस्त है, उसने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था. हाँ तो स्टार्टअप को फंडिंग मिली थी ढेर सारी. ठीक है. हाँ. तो अब उसके बाद उन लोगों को, मतलब कुछ लोगों माइक के को ये पास मिला. आके बोल. माइक के पास हाँ, आके बोल. कुछ लोगों को, मतलब आरएसयू जानते हो तुम लोग क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट. रेस्ट्रिक्टेड नहीं. स्टॉक यूनिट मिले थे. मतलब बेसिकली क्या होता है कि कंपनी बोलती है कि आपको शेयर्स मिले हैं कंपनी के, बट प्राइवेट कंपनी है, तो आपको कुछ दिन बाद उसको आप वेस्ट करते हो. बेसिकली आपको कुछ दिन रहना पड़ेगा कंपनी में, Yeah. तो आपको मिलेगा. तो एक मेरा दोस्त था, उसके कंपनी में कोई ऐसे गया था और उसने क्या किया, उसको मिल गया कुछ आरएसयू. तो और उसके हिसाब से जो उन लोग ने वैल्यूएशन लगाया था, वैल्यूएशन तो अल कुछ भी होता है ना, उसको ऐसा लगा कि उसको 82 लाख रुपीस मिलने वाले हैं जब भी वो शेयर्स. बट ये सब हवा में होता है. उसने जाके फ्लैट बुक कर लिया. ठीक है. अगले 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 4 महीने में वो कंपनी का प्रोडक्ट डूब गया. और एंड ही वाज लेफ्ट विद होप. तो ये हालत मत करो. पहले नूनेज हो जाने दो, बेलिंगम की बात करेंगे जब बेलिंगम आएगा. Listen, guys. I think we should take time out to appreciate how we are approaching everything. We signed Carvalho before the season was done. We've signed Calvin Ramsey, backup for Trent. Apparently, Mane जाने के पहले ही हम लोग ने replacement sign कर लिया है. The club is doing such a fabulous job, यार. I mean,
At the moment I don't have a reason to complain about anything, which also goes to show कि हम लोग यही बात करते कि जो draws हुए थे, we kind of fell short because of the number of draws, and this signing could just help us convert those draws into wins. यार, I mean, he's a striker. 2017 से हमने striker sign नहीं किया. The fact that we are so proactive so early in the transfer window to get him, I think it just proves Jurgen Klopp wants him. And listen, I mean, if Jurgen Klopp wants him, who are we to say anything? All these years, his signings have been phenomenal. So very, very happy at the moment. If it happens, we'll be over the moon. If it happens. या वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा हो जाने दो फिर नाचेंगे. Shanti says, was seeing Carvalho highlights. He was phenomenal with a half decent number 9 in Mitrovic. देखो भाई, मिट्रोविच को हाफ डिसेंट 9 मत बोलो, वो बेसिकली चैंपियनशिप का इब्राहिमोविच है वो, ठीक है. तो उधर का जयकांत शिकरे वही है. तो मतलब मतलब बट हाँ, आई गेट योर पॉइंट यार. देखो, ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर हु बेसिकली प्लेज बिहाइंड द स्ट्राइकर. तो आई गेट योर पॉइंट. एक क्वेश्चन आया Nidhi, है. I want to ask you, Nidhi, if this deal gets done, okay, if हम्म, this deal gets done, and we give contract extensions to successfully to Gomez, Keita, and Salah, it would be a great transfer window, right? इट वुड बी. एक बार फिर से बोलो. uh, एक चीज मैं बोल रहा हूँ. सो जयजीत, वी आर वॉचिंग इंडिया वर्सेस कंबोडिया. इट्स ऑन द टीवी. दिस It's स्ट्रीम literally इज अ on over there. या अभी half इट्स time है, अभी इट्स अ ads आ रही लिवरपूल है, उसको स्ट्रीम. देख रहे हैं. और इन इंडियन, सो आप नीचे स्टिकर भी पढ़ सकते हो, ठीक है. बस एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार. दिस इज लाइक, मतलब हम देखते हैं इंडियन फुटबॉल, ठीक है. और ये कुछ, मतलब ये कंपटीशन नहीं होता है. एनीवे, Yeah. हाँ, तू क्वेश्चन पूछ रहा था. मैं बोल रहा था कि if we do sign Nunez and if we do sign Ramsey, apparently Fabio Carvalho is done. So do you think if we give contract extensions to Gomez, Naby Keita, and Mo Salah, it would be a great transfer window? बस हाँ हाँ. और अगर कैल्विन रामजे आ जाता है और एनी गुड बैकअप फॉर ट्रेंट, दिस इज 10 आउट ऑफ 10 ट्रांसफर विंडो यार. मतलब और क्या चाहिए तेरे को. Yeah, I mean, I'm excited, bro, because like we have mentioned a few times already in the stream that a striker is something which we have never played with. And if Jurgen Klopp decides कि भाई we need to pay 80 odd million for a striker, uh, things are going to be very different. Nidhi, do you think the fact that we have signed Jota, हम्म. we've signed Diaz, and if we signed another 22-year-old, we are thinking about life without Mane and Salah already in the long term? 100%, 100% यार. एंड वी शुड सी, द थिंग इज, मैं मतलब अभी हम लोग ने जब बात की थी एक दूसरे स्ट्रीम में, मैं वही बोल रहा था यार कि देखो, इवेंचुअली दे आर ऑल गोना लीव. वी हैव टू प्लान फॉर लाइफ विदाउट देम. इवन इफ वी गेट द बेस्ट एंड दे डोंट लीव एट ऑल, ये रिटायर भी हो गए लिवरपूल में, तो भी उनके बाद का लाइफ तो प्लान करना ही है ना. तो आई थिंक वी डेफिनेटली, जैसे माने का रिप्लेसमेंट वाज लुइस डियाज. we had already planned, and I think Do that you kind of think we already conversation. knew that Mane was leaving? And that's why we i signed Lewis Diaz? I think we had an indication. See, players talk, right? I mean, I think, there was an indication. एक क्वेश्चन आया है. By the way, guys, 100 people watching me and Nidhi. Thank you so much, guys. Yeah, We thank you. really appreciate it. Thank you. Yeah. Please do like What the do you guys video. think of Chouamini deal and no replacement for Fabinho next season apart from Hendo? भाई मतलब इसमें दो चीजें हैं कि why do you need a replacement for Fabinho? Fabinho has just signed a long-term contract last season. He's one of the best defensive midfielders in the world. So why do we need to replace him? I think what you mean is a substitute. उसका substitute यार Henderson है. And I think third substitute जो आप बोल रहे हो, उतना बड़ा squad लिवरपूल
रखती नहीं है, then we look at players like Tyler Morton etc. No, मतलब but I'm still. By the way, guys, loads of people watching. Please do like the video if you like what we're doing in general, managing the monk. But we have Fabinho, we have Thiago, we have Henderson, we have Naby Keita, we have got James Milner, we've got Curtis Jones, we've got Harvey Elliott at the moment. मैं चेम्बरलेन को तो गिन भी नहीं रहा हूँ. तो ये 7 प्लेयर है जो मिडफील्ड में खेल सकते हैं और फाबियो कार्वालियो साइन हुआ है 8वां. सो आई Tyler Morton, अंडरस्टैंड I understand Fabinho का like for like, but Fabinho is one of the best defensive midfielders in the world. उसका लाइक फॉर लाइक ढूंढना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. अगर आप सोचो चाउमिनी वो प्लेयर होता तो वो भी नहीं होता, बिकॉज what he offers is something different and Fabinho offers is something different. I We will have to nurture our players, and Nidhi, I agree with you. Like, like, maybe I'm not saying Tyler Morton is that player नहीं नहीं, because बट चांस तो देना पड़ेगा ना. we haven't seen enough of him to say that. But we cannot sign a 70 million player, a 80 million player to be a backup for Fabinho, नहीं कर bro. सकते हैं यार. वो we never we don't have that kind of money, we don't have that kind of बैकअप. यार तो बैकअप है ना, फेबिनियो का बैकअप हेंडरसन है, टाइलर मॉर्टन है. तुमको थर्ड बैकअप 70 मिलियन का प्लेयर नहीं होगा, लिवरपूल में तो नहीं होगा. हाँ जी, शिंदे जी, मैं वही बोल रहा हूँ, बैकअप की बात ही कर रहे हैं हम लोग. एग्जैक्टली, वी आर स्पीकिंग अबाउट द बैकअप, बट द पॉइंट इज दैट Henderson does a decent job at number 6, and in an ideal scenario, we would want to sign a very good player as a backup, but we can't spend 50-60 odd million, I personally feel, on a backup. That's what I feel. IndieCop is in the chat. Nitika, why is Bayern fooling around with us? That Mane and 3 ballon. यार देखो वो मतलब पता नहीं वो उन्होंने क्यों बोला, बट हाँ कर सकते हैं. एक कोई बोल रहा है इब्राहिम सान्यारे कुड बी फास्ट, बट वो क्यों यार देखो. इब्राहिम सान्यारे प्लेज इन द डच लीग, ही कैन गो टू अ लॉट ऑफ क्लब्स जहां पे ही विल गेट टू प्ले अ लॉट मोर रेगुलरली. वो क्यों एक्सेप्ट. Before I just come back in 2 minutes, भाई लोग, let's talk about Nunez ना. Apparently 80 million दे रहे हम लोग एक प्लेयर के लिए. Let's celebrate that for a bit यार. इसमें भी हम लोग अगर कौन है अभी क्या नहीं है किसका बैकअप. हाँ, उसको क्यों नहीं लाए. मतलब थोड़ा इंडियन पेरेंट वाला कि फिजिक्स में 90 आया है लेकिन केमिस्ट्री में तुमको 85 क्यों आया, वो सीन है. Why are we not trying for Nkunku? Because Klopp doesn't want to. I think we are going for a different kind of player which Nkunku does not fit. Frankly, I don't know the answer to this. But हाँ, थोड़ा नूनेस के बारे में बात करते हैं यार. एक आया नूनेस का क्वेश्चन, वेरी गुड. What can Nunez bring to our team? देखो यार, Nunez is, जैसा we've seen Nunez do damage to our club also. He's tall, he's fast, he's direct. He's the guy who can play um, through the middle. Exactly जैसा हमको मतलब वो forceful striker वैसा, ही कैन ब्रिंग दैट. मतलब जनरली लोग सोचते हैं कि टॉल स्ट्राइकर तो मतलब ही जस्ट स्कोर हेडर्स, बट नूनेज वैसा नहीं है. नूनेज कैन प्ले in a pressing system as well. So yeah, that's what he brings to the team. The only problem with our midfield is that none can play the entire season without being injured, and the next season fixture will be very congested. That's a fair point, yeah, Rashid. But I think that the transfer window has just started, so थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है. मतलब कैसे कर सकते हैं. जो भी है, पेड्रो का नया ट्वीट तो देखो. ओके, लेट्स सी. मैं इसको करने वाला हूं अभी. Okay, so Pedro apparently, okay. Wow, this okay.
Manas, बोलना भाई. apparently it's a done deal. What? Pedro, I mean, I can't pronounce his last name, but he has Benfica has already received the proposal of Liverpool for by Darwin Nunez. I mean, this is translation screwing it up. हाँ. Business of 100 million euros, 80 million fixed plus 20 million in objectives. Darwin will sign a 5-year contract with Liverpool. Oof. If If that. so, okay, let me put a disclaimer first. Let me put a disclaimer first. I have not heard of this guy before. See, I don't even follow him. So first thing, let me go. Let's follow him. Okay. I had not heard of this guy before today. तो अगर आप लोग बोल रहे हो कि he is trustworthy and he is ये I am seeing Twitter right now as well, Nidhi, कि क्या है क्या या नहीं है. तो मतलब दिस इज बिग न्यूज सो मतलब यार सही है मतलब अपेरेंटली हो सकता है हो गया हो बट विल स्टिल वेट फॉर ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन मेरे को तो आई डोंट नो दिस पेड्रो गाय तो बोल नहीं सकते हैं क्या है क्या नहीं है I'm reading everywhere as well कि done deal. हाँ सॉरी पेड्रो का मैं भी देख रहा हूँ. 5 year till 2027 is what I'm reading. It could be wrong, yeah, but see, I don't want to jump the gun. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा वेट कर लेते हैं so somebody has sent me this and this is the comparison between Sadio Mane and Darwin Nunez uh, okay this looks interesting this is interesting Apparently, personal terms have been agreed, Niti. Before I say anything, apparently हाँ वही personal मैं बोल रहा हूँ terms. कि थोड़ा सा रुक Yeah, जाते हैं yeah, थोड़ा yeah, सा रुक जाते हैं yeah. Hmm. हाँ, तू क्या चार्ट डाल रहा था, निधि? एक मिनट फिर से डालता हूँ hang on सॉरी गाइस सबके चैट्स मिस हो रहे हैं मैं लूंगा एक एक करके या सब लोग धीरे धीरे लेंगे. एग्जैक्टली, मुदस्सर जी, आई एम नॉट रेडी फॉर अदर नबिल फकीर सागा. Exactly. We don't want to be हाँ इसलिए बोल रहे हैं थोड़ा सा रुक and जाते हैं we don't want to be trolled, ना, to celebrate. ये हो गया हाँ signing कि और पता ये चला हो नहीं हुआ गया signing. अभी Ayush Lala is sending something. Ayush, who has sent you this? Yeah, need Ornstein, David Ornstein to come in right now. I agree with you totally. Why did I remove the nail polish? Because I had to shoot. That's why I removed it. I'll put it soon. Hashtag चालू करे क्या? अच्छा ठीक है चलो मैं एक चीज बोलता हूँ अगर डार्विन नूनेज साइन किया ना और कैल्विन रामसे भी साइन किया ना एक दिन के लिए चल मैं भी ब्लैक नेल पॉलिश लगाएगा चल I'll निधि put a उस picture ये डेयर थोड़ी है. If you want to नहीं, do मेरे it, लिए है मेरे लिए है लाइक आई डोंट इवन पुट मैं चेहरे पे आज तक वैसलीन लगाता हूँ भाई ठीक है तो मेरे लिए है आई एम नॉट apparently, मेट्रोसेक्सुअल आई एम नॉट apparently, मेट्रोसेक्सुअल लाइक यू मानस apparently, Fabrizio Romano. Official proposal from Liverpool. This is Fabrizio Romano. Official proposal from Liverpool for Nunez will be 80 million plus add-ons. Package of 100 million. Benfica will make a decision soon, while Man United are also in contact with his agent. Liverpool are मेरे prepared को to offer Nunez a 5-year deal, waiting on Benfica. मेरे को पता है द सिनिक इन मी is थोड़ा my cynic meter is going bing 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 because 100 million मतलब मैं सोच रहा हूँ किसको बेचे ये लोग किसको बेच के आए हैं मैं वो सोच रहा हूँ Now, Pedro has said that Liverpool and Benfica have found a total agreement for Nunez, 68 million pounds, 17 million in bonuses. 68 million, 17 million bonus. that's यार in ये सब pound अभी, yeah, that's in pounds. अभी ये तो हम लोग ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं लाइव जैसे हम लोग टीवी पे बैठे हाँ जैसा हम ब्रेकिंग न्यूज Breaking news! Here on Menace on the Darwin Mount Nunez is signed for Liverpool.
Nidhi, कर दे, go for it, Nidhi. Go for an Arnab, Nidhi. I think we warrant, we deserve an Arnab right now, Nidhi. The world deserves an Arnab from you. Nidhi, go for it. While I sip on But my Diet Coke, Nidhi, we need a. Nidhi, go क्या? for it, Nidhi. We are Go waiting for for you what? to do. Go for an तू Arnab right now. तू सच में बोल रहा था? हाँ, सच में बोल. You listen Do to it, me. Nidhi. Yeah. You listen to me. Here on Menace and the Monk. No, 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 Manas Singh. You will not speak over me. I'm not. I'm Even not. though you have not spoken anything, I will still ask you to shut up. This is the moment, guys. This is the moment. Darwin Nunez to Liverpool. We are getting excited without official confirmation. The hallmark of Liverpool football fan clubs. Like हम लोग फालतू में और नहीं हो रहा है यार, खांसी वासी है. मतलब एक तो यार तुम लोग अर्नब की नकल कराते हो यार, मतलब कोई अच्छे आदमी की नकल करा लो. पब्लिक Right? हंस रहा है. निधि भाई ओपी लेजेंड हाइलाइट्स हंस रहा है. कार्तिका नायर हंस रहा है. एनीवे, आई रियली होप दिस No, हैपेंस. this is अरे my show. अरे This is my show. the last time Nidhi did this was when we sent Ozan Kabak. Is it possible if we sell Mane, Nat, Neko, Taki, and current year's transfer budget will be enough to fund Nunez deal? होना तो चाहिए यार. देखो देखो, अगर यार 5-6 देखो, प्लेयर बेच रहे तो फिर होना ही चाहिए. मतलब अगर अब ऐसे मतलब दर्जन में बेच दोगे तो मतलब हो ही जाएगा. राइट. हाँ, ये देखो, ये तुम लोग यार अब इसको ऑल इंडिया रेडियो बना दिए हो. मतलब वो होता है ना कि कानपुर से सुनील की फरमाइश, अब मैं ही खान, मतलब उस तरह Nidhi, का तुम do लोग ने this. बना. Nidhi, do क्या? this. Nidhi, you क्या? have to do this. हाथ चले. या तो यार देखो, माने पैसा किससे किससे आ सकता है. वी कैन गेट माने को बेच के. I personally don't want Mane to go, but I think he is gone. Mentally, he is not there. तो obviously मतलब अच्छा तो नहीं लगता है माने के, मतलब I would never want Mane to leave, but it looks like यार कि माने जाने वाला है. तो माने क्या एग्जिट एंड फिर मीना मीनो, ओरिगी के लिए वी गॉट नथिंग. नैट के लिए मे बी वी गेट सम मनी. नेको विलियम्स के लिए मे बी वी गेट सम मनी. These are some of the Listen, if players we that get we may get Nidhi, money. Nidhi, if we get 40 million, what we want for Mane, 17 million for Minamino, we get 13 million for Chamberlain, we get 10 odd for Nico and Nat Phillips. उधर ही तेरा 80, 90, 100 हो गया. उधर ही अपना Calvin Phillips, Fabio Carvalho और Nunez का हो ऑक्सलेड, गया. हाँ कोई बोला ऑक्सलेड. यस, ऑक्सलेड आल्सो. वही, मैं तो ऑक्सलेट का 10 गिन रहा हूँ. सो वही गिन हाँ, के मैं 10 बोल से रहा हूँ ज्यादा नहीं, कि 10 से ज्यादा नहीं मिलेगा ऑक्स का अपने को. वी सो वोंट वही गेट मोर अपना देन हो 10 गया. crores. उधर ही 80-90 हो गया. उधर ही अपना ट्रांसफर विंडो हो गया. इवन इफ यू पे 80, देन 5 and 4, which is 90 million in total. 5 for Fabio Carvalho and 4 for Calvin Ramsey, which is 90 million. उतना सेल्स में 5-6 प्लेयर के साथ हो जाएगा. Apparently Minamino, Nidhi, I'm reading, we have to discuss this as well, Nidhi. Minamino is 17 million exit apparently. यार मीना I think he deserves to move on यार. देखो he's too good to be 7th 6th choice यार. Honestly, सच बोल रहा हूँ. I'm not saying he's some world class player or anything, but मतलब 6-7 choice लायक भी नहीं है यार. मतलब अच्छा Yeah. प्लेयर है. Okay. Will we But sell guys, Karius? Will we sell? No, Karius's contract is getting over. So yeah. he'll go in the summer. On 1st of July, he's free. हाँ, sorry, कुछ बोल रहा था तू. Yeah, so guys, before again we get very, very excited, it's not a done deal. Exactly. It's not a अभी done अभी deal. अभी तक हुआ नहीं है confirm. It looks like it might happen, but अभी तक हुआ नहीं है. अगर like Chaumini apparently was a done deal, and then Real Madrid came in, and then
and did what they had to do with the agent and with Monaco. So abhi tak pata nahi hai it's a done deal or not, but it looks like we are wanting to pay what they want, and it looks like the player wants to join us as well. So Kiyosaki Honda, by the way, do you remember Honda Nidhi from AC Keisuke Milan? Honda, of course. Who He's doesn't? on the touch. He's on the touchline for Cambodia. Is he in the coaching staff? Yeah. He might be the manager. It looks like he's the manager, bro. Liverpool, I'm saying India lead 1-0 अभी against भी Cambodia. Uruguayan striker at Liverpool again. यार मतलब we have the privilege of seeing Luis Suarez wreak havoc at Premier League defenses. Hopefully, if Darwin Nunez signs for us, hopefully he can be similar, If he's perhaps half the better. player that Suarez was, we are in for a treat, guys. देखो यार, एक तो लुइस डियाज है, मतलब अभी एक तो लुइस डियाज विल हैव अ प्री सीजन दिस टाइम विथ लिवरपूल, तो ही विल प्ले बेटर नेक्स्ट सीजन. आई एम 100%, आई थिंक वो अच्छा खेलेगा. एंड अगर वी गेट बेटर और प्लेयर्स तो या बट मानस, मैं तेरे से एक चीज पूछना चाहता हूँ, मेरे को एक बात Yeah. बता. और ये क्वेश्चन आया भी था, व्हाट हैपेंस टू जोटा नाउ? What happens to him? What happens to Jota now? क्योंकि Jota, if you remember, why I'm asking this question is because if you remember, Jota was sort of playing through the middle Yeah. when the season started. देख, Yeah. फर्मिनो का तो अगेन मैं अपनी हर स्ट्रीम वाली लाइन फिर से रिपीट कर देता हूँ. आई थिंक अब तो कोई ये बना सकता है, कंपाइलेशन बना सकता है कि क्या मतलब हाउ मच कि मैं मेरा बोलते हुए कि आई लव बॉबी, बट बॉबी यार देखो अब उसको आई थिंक ही विल बी he will understand that his role will be reduced, Yeah. right? He's also getting older, so he will understand that his role, his position, everything is getting reduced. वो I Yeah. think Bobby will understand. So Yeah. he will come on as a sub, or maybe next we run down his contract and then he moves on. That is also possible यार, क्यों नहीं possible है? तो बिल्कुल हो सकता है. Yeah. Um, I think people need to understand one more thing. This is a very tough year. Bless you, Niti. This is a very tough year in front of us. It's a World Cup year in the middle of the season. The Champions League ka group stage is going to be done in 8 weeks, which usually used to take like 10 odd weeks. 8 weeks mein ho raha hai. Everything is going to be so cramped. We will need all our players. Jota is going to start games. Salah is going to start games. Diaz is going to start games. Whoever signs, if signs, he will start games. If Carvalho signs, he will start games. Don't worry about that. I think, but मेरे को सिर्फ स्ट्रेस फर्मिनियो का नहीं थी. I think फर्मिनियो को we will let him play his run down his contract out. contract. Yeah. I think हाँ, फर्मिनियो वही का होने स्ट्रेस वाला है मेरे को. है. एक ये क्वेश्चन पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, मतलब ये एक सीजन है जिसमें आप 92 पॉइंट्स लाए हो, ठीक है, विथ एन एफकॉन इन द मिडिल, जहां पे आप यू लॉस्ट टू ऑफ योर बेस्ट अटैकिंग टैलेंट्स इन द वर्ल्ड. यू हैव वन टू ट्रॉफीज. एक फाइनल यू लॉस्ट, बट फ्रैंकली यू डोमिनेटेड दैट गेम. एक्सपोज्ड हाउ? ओके, मतलब if this is getting exposed, then मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब I don't get this. Like a lot of people say these things कि 4-3-3 अभी expose हो गया. ये अगर expose हो गया तो हमको यार we should have lost more games ना, drawn more games, है ना? तो Sorry, हाँ. ये expectation क्या है कि we play every game and we win every game 4-0? वैसा नहीं होता है. I mean, I'm not talking about you, Bhaskar, personally, but in general, I'm saying कि back on earth, in reality, you don't win every game 4-0. Yes! 2-0. Sunil Chetri scores the second. India 2, Cambodia 0.
What a header, bro, तो from Sunil Chetri. What a guy. What a player, dude. Sorry, yes, Nidhi. हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो, इसको मैं 2-0 कर देता हूँ पहले। हाँ, ऐसा नहीं होता है। वी डोंट यू डोंट विन एवरी सिंगल गेम 4-0। yeah, तो 2-0 कर दिया, बाय द वे वी नीड 2-0 अगेंस्ट कंबोडिया, राइट? yeah, तो एक्सपोज तो भाई पता नहीं, मतलब आई डोंट अग्री विथ दिस स्टेटमेंट एट ऑल। क्षेत्री ओपी लिखो चैट में सब लोग, भाई लोग। धेनुका इज हियर। yeah. धेनुका इज धेनुका सेज 2-0। आई नहीं, रेड फमीनो माइट डन टेक। डील नहीं हुआ. चेत्री ने गोल मारा दूसरा. Captain, leader, legend, bro. What a player, dude. What a player. 80 plus goals in international football, bhai. What a guy. Absolutely love him. That's why we need a number 9 as well, guys, to finish those chances. And जो आप 4-3-3 की बात कर रहे थे, हमने ऑलरेडी पहले बात की है ये कॉन्वर्जेशन में. 50 odd minutes हो गए हैं कि we might make a transition. We might transition to a 4-2-3-1 where we see Fabinho, Thiago slash Henderson slash Milner slash Naby Keita play in the two. We might see Fabio Carvalho play in that hole. We might see Diaz, Jota on the wings and see Nunez up front. So possibilities बहुत है, but we have not been found out at all. I totally agree with Didi. 92 points is a lot. Sure, we drew a lot of games. That's why we're signing a striker. That's not because we play a 4-3-3. It's because of us not finishing those chances. Let's hope that uh, we are more clinical next season, if it is even possible. छोटा क्षेत्रीय नहीं है नबील, ये सबसे बड़ा क्षेत्रीय है। यही तो है सबसे बड़ा। Yeah. All right. I'm trying to see more updates of. I'm saying Chetri only. Love that. Apparently, Usman Dembele at Chelsea could happen, huh? वो भी फ्री एजेंट है ना, डेम्बेले? हाँ. I am just saying एक और, Nunez. लाइक आई एम लुकिंग फॉर सम कमेंट्स यार। हाँ. नहीं, आराम से. निधि, एक बात, हाँ, सॉरी. ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, हाउ वाज लुइस सुआरेज वाज फेनोमेनल एट लिवरपूल यार, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स, नॉट जस्ट लिवरपूल बट द प्रीमियर लीग हैज एवर सीन। ही वाज फेनोमेनल यार, ब्रिलियंट प्लेयर, मतलब गजब था वो, क्या ही बोल सकते हैं। निधि, तेरे को यस, अभी let's just have a word about honestly about Bayern Munich's bids for Sadio Mane. I'm genuinely asking because apparently they made a bid for 30 million or 25 million, which would reach up to. It's out there in the open, but it's been very vocal from our point of view that we have laughed at their second bid and called it इट इज disrespect. लाफेबल, इट इज लाफेबल। मतलब क्या, और क्या करोगे यार? मतलब दिस इज लाइक सेइंग कि अगर मैं तेरा घर खरीद रहा हूँ ना मानस, तो मैं तेरे को बोलूंगा कि चल मैं तेरे को ना 50 लाख दे रहा हूँ यारी रोड के फ्लैट का, ठीक है? हाँ. और मैं तेरे को ना उसके ऊपर ना 50 लाख और दूंगा अगर तेरे घर में ना, मतलब 3 दिन लगातार अगर अगर तेरे घर में कभी डायमंड का माइन मिल गया ना, तो मैं तेरे को 50 लाख और दे दूंगा। ये वैसा कॉन्वर्सेशन है। यस, इंडिया विन। No, we haven't won. 62 minutes हुआ है बस. ओ साला, हाँ. लाला, इडियट। 62 मिनट्स हुए हैं. 2-0 जीत रहे हैं हम लोग फिलहाल. हाँ. मेरा टीवी उधर चल रहा है, उस पर कार्टून चल रहा है, तो मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, नशा करता है। हाँ, हाँ. तो यार देखो, मतलब बायर्न का बिड तो यार देखो, जो भी है, ही इज इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग। उनको लेवेंडोव्स्की, जो कि आई थिंक इज 33 Yeah, बायर्न के, could be. हाँ. उसके लिए दे आर आस्किंग व्हाट फॉर व्हाट, लाइक 30-40 मिलियन। Yeah. आई एम नॉट कंपेयरिंग माने एंड लेवेंडोव्स्की, आई एम जस्ट सेइंग कि तुमको एक 33 ईयर ओल्ड प्लेयर जो कि अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसके लिए तुमको चाहिए कि तुम, मतलब तुमको 30-40 मिलियन चाहिए।
और तुम एक AFCON विनर, अभी 29 years old, he Listen, he's one clearly of the has best in the world. Sadio he's Mane is one one of of the the best. best. Exactly, right. He is one of the best players in the world. उसके लिए तुमको चाहिए कि तुम 20 मिलियन 25 मिलियन के बिड दोगे, तो वैसे नहीं चलता है ना. वी शुड लाफ एट दीज काइंड ऑफ बिड्स. I am saying for every insulting bid, no, we should add 5 million on his valuation. And this is one thing where I think FSG are very ये good. ये निधि, ये तो तू मजनू भाई गिरी कर रहा है. तूने वेलकम देखा है क्या? वो एक खोपा हाँ, ऐड करता है ना हमेशा परेश रावल पे. ये तो वैसी बात होगी ब्रो. तो और क्या साला, मतलब ये कैसा बिड है भाई कि तुम तीन, मतलब बेवकूफ समझाए क्या, मतलब किससे किससे डील कर रहे हो भाई, मतलब क्या है? अलीबाग से थोड़ी ना आए हम लोग, मतलब व्हाट इज Hey, दिस? listen, Alibag is beautiful. Huh? I've been to Alibag a few times. Nidhi चुप हो गया. Nidhi, do you want to do an Arnab on the bids made by Bayern Munich? हाँ, बाद में भाई, अभी इतना खासा हूं मैं. निधि निधि ये सस्ता मजनू लिखता है सस्ता कार्तिक. मजनू. मैं लाइफ में कुछ भी हूं, मैं सस्ता नहीं हूं, ये याद रखना. और ये एफएसजी ने भी प्रूव कर दिया, अगर वो 80 मिलियन में साइन कर ले किसी को, दे आर नॉट सस्ता एट ऑल ब्रो. यार आयुष प्रणव लाला, निधि निधि आयुष लाला कम से कम 1.5 घंटे से ये लिख रहा है, वो ले ले उसका कमेंट. LFC 1.5 घंटे से तो स्ट्रीम ही नहीं चल रही है. हाँ बट वही कब से बोल रहा लिवरपूल है. इंटरेस्टेड इन अ विंगर एज वेल. डांजुमा एंड एंटनी आर ऑन द रेडार. विंगर भाई, मतलब ये सब बोलते हो तो मेरे को तो लगता है कि साला को भी बेच मारे हैं ये लोग. पता नहीं यार, मतलब विंगर अभी कहाँ और लेंगे हम लोग, बट राइट विंगर तो मुझे ऐसा लगता है वी नीड. प्रणव यार, तू हमेशा ऐसे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन पूछता है ना. व्हाई आर अदर क्लब्स नॉट ट्राइंग फॉर मनी? ऑनेस्टली आई डोंट नो. मतलब दिस विल क्रिएट प्रेशर ऑन बायर्न. या इट विल, बट पता नहीं क्या बोल सकते हैं यार. आई डोंट नो. पता नहीं. आई डोंट. How do you think next season would affect us because of the World Cup? Yeah, not just us. Everybody will be affected because of the World Cup. Because of, देखो यार, बहुत cramped schedule होने वाला है. Next season is going to be extremely cramped. One of the toughest seasons ever bro, I think. हमारे लिए एडवांटेज ये है कि साला और लुइस डियाज आर नॉट गोइंग टू द वर्ल्ड कप, सो दे विल गेट दैट रेस्ट. है ना? Yeah. तो Simicas, Robo, Matip. I'm sure we have multiple players. Milner तो चल ठीक है, is a squad player, but we'll have multiple players who are not going to the World Cup, yeah. And that's why I think it'll be great if we sign Salah on a, like, if we somehow अगर 2 convince साल का भी Salah, Gomez and Keita, bro. Naby Keita as well, bro. Like, अगर 2 साल का भी एक्सटेंशन साला साइन करने के लिए रेडी है ना, यार वो अभी तो वही बात आ जाती है ना, how much are we willing to pay him, bro? Like, I'm just trying to find more Darwin Nunez का कुछ अगर. स्कोर क्या है? 2-0. Yes, 2-0 apparently अभी तक. Yes, it's 2-0. ये अच्छा क्वेश्चन है मानस. Excuse me. Any player What? you would like from the relegated teams? Norwich, like Burnley से तो I don't think any player is. I don't like any player from Burnley who could fit in. But Norwich or Watford से, do you think, are there any interesting players that you can think of? देख, वो एक टाइम था जब भी अपन इस्माइल सार में बहुत इंटरेस्टेड थे, हाँ. बट आई थिंक अभी वी हैव आउटग्रोन, with all due respect to Sar, we've outgrown that interest, and I think the Rafinha has signing, not been relegated, Jose. Rafinha has not been relegated. yeah, Rafinha के लिए 65 million they're asking. The only way that happens is if Mo Salah leaves. Like, Rafinha can only happen if Salah leaves. This is what I feel. We can't sign Darwin Nunez and Rafinha in the same window. मेरे हिसाब से तो नहीं होगा. Max Aarons काफी लोग बोल रहे हैं.
हाँ, मैक्स एरन्स काफी लोग बोल रहे हैं. निक पोप नहीं यार. So Nick Pope is not the kind of keeper that we play with. Nick Pope is your proper old English keeper blocker basically. Nick Pope is मतलब वो liability बन जाएगा हमारे सिस्टम में. Nidhi, I'm reading a lot of not comments away. I've read a few articles stating that Kelleher might want to consider his And I future at Liverpool. and I get it, and I get it. Again, he would a lot of he can start for a lot of teams in the Premier League, Yeah. right? Um, so I get it. Perhaps what we can try doing is the see if he's hell bent, we should try to convince him that you played in the cup games, you'll still play in the cup games, because see we Allison को तो replace नहीं करने वाला है वो, right? um, but cup games में खेल सकता है. If he's hell bent on leaving, then maybe let him go on loan to some club, right? That's because Keller is a very good keeper. I don't want to lose Kelleher at any cost, right? So yeah, we should. He's the thing is he can be a starter for a lot of Premier League clubs. तो देखते हैं क्या होता है. Who will play the double pivot if Vijit? It's not Pool, it's Liverpool. That's the first thing. Double pivot with Fabinho in a 4-2-3-1, then it's Thiago. I think Thiago plays in that position along with Fabinho. Um, the thing is, it is different. Ben Foster, not a bad shot. Ben Foster, I यार think, Ben Foster तो यूट्यूबर बन गया अभी. हाँ बेन फॉस्टर इज 40 years old यार. मतलब फिर उससे अच्छा तो फिर वी गो साइन दैट ब्राजीलियन कीपर ना, उसको चांस दो फिर. भाई मिडफील्ड साइनिंग्स भी बात करेंगे यार. दिस स्ट्रीम थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में, न्यूनेस के बारे में. पहले तो न्यूनेस साइन तो होने दो. मतलब भाई तो सांस तो लेने दे बे वाला मीम जो है ना. मगर इतने ओके सो मैं भी वही देख रहा हूँ. A deal is agreed between Liverpool and Benfica for Darwin Nunez, 80 million and 20 million in add-ons. Pedro Sepulveda says this. Okay. ये तो हमने ऑलरेडी. हाँ मतलब now it's being reported. It looks a lot of people are reporting it, but देखते हैं. यार अभी. Do you see Van de Beek and Bruno competing for So as if you know Harriet from Anfield Rap as well, Nidhi, she hmm, has just quote retweeted something about Darwin Nunez. Uh, and that tweet is Darwin Nunez is one step away from Liverpool. The English club will pay around 100 मैं million उसी का euros. ट्वीट देख रहा हूँ. मैं उसी का ट्वीट देख रहा था. Yeah, so. Ooh, bhai sab. So Robert G, who is a regular at Anfield Rap, okay, has said, can reveal that my sources tell me Darwin Nunez has been offered the number 10 shirt at Liverpool. ठीक है. If that's true, that's big. That if that is true, then then Sadio Mane, I think it's likely that we are Yeah. expecting a bid that would be accepted, because Mane से लेके तो उसको देंगे नहीं. मतलब ऐसा तो नहीं है. I think Mane is a goner यार. I mean, it makes me sad, but um, I guess at some point players will move on. Yeah, If you want to apparently sell a 68 player from million plus 17 in bonuses. So, yeah. If you want to sell a player from our club, who will you choose? Yeah, there are a few. I think that Ox, if we get the right price, should move on. Um, Minamino, for his sake, should move on. Um, Nat, for his sake, should move on. So there are a few players that I think
some players should move on. San Miguel ka contract is up, Bhaskar. He you don't need to sell him. His contract is up in the summer. In what is the date today? 8th, right? In 22 days, Adrian is a free agent. Adrian. I was there in Istanbul when we won the penalty shootout and he was the hero, bro. Adrian! As Klopp said that day. Okay. Anyway, Nidhi, I think 1 घंटा प्लस हो गया यार, काफी एक टाइम हो एक गया. फेब्रिजियो का ट्वीट कोई बोल रहा है, एक बार देख लेता हूँ. ओके, भूख भी लग रही है. देखते हैं क्या बोल रहा है फेब्रिजियो भाई. देख यार, हम लोग तो अभी थोड़ा रुक के, नहीं, फेब्रिजियो हैज नॉट सेड एनीथिंग न्यू. हम लोग थोड़ा एक्साइटेड तब होंगे जब देखो, मैं बोल रहा हूँ कौन से एजेंट के बोलने पे मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा. पॉल जॉयस बोलेगा तो मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा. पॉल जॉयस डजंट टॉक, मतलब विदाउट एनीथिंग. जॉयस बोलेगा तो डेफिनेटली एक्साइटेड हो जाऊंगा. um, निधि भैया, हाउ अबाउट सेलिंग? यार देखो, इसमें दो चीजें हैं. नाविगेटर वी शुड नॉट सेल बिकॉज ऑफ अ फ्यू रीजंस. देखो, एक तो ही हैज बीन ब्रॉट इनटू द टीम and he's been injured. This is the first season where Naby Keita has been playing throughout, matlab, rather uninterrupted, and we have seen the effect of Naby Keita. या Yuri Telemans does not have the pace to play in Liverpool. मुझे ऐसा लगता है. I don't think he has the pace to keep up with our style of play. So Naby Keita, I mean, I was very happy when I heard that we are going to give him a new deal. I think we should, right? Because Naby Keita, Burit elements तो नहीं यार, बिल्कुल नहीं. I don't think he's a good player, but not for our system. तो Naby Keita तो यार देखो, and secondly, Thiago injury prone है. Milner is 37, 36. Henderson is also getting older, right? So Naby Keita is younger. He's played regularly this season. तो definitely नहीं बेचना चाहिए. You don't tinker with the team just for the sake of it. Already, if Mane is leaving, या you are going to miss a big part of the team anyway. You don't want to tinker too much. यू शुडंट बिकॉज आई एग्री विद निधि और मैंने हमने लास्ट वीडियो में मिलनर के बारे में बात कर दे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वही वी वर सेइंग नॉट टू मच चेंज इज आल्सो गुड फॉर द क्लब. यस इट्स 2-0 इंडिया टू कंबोडिया nil अभी भी 2-0 ही चल रहा है 6-3 with both the goals. And guys, if you have not liked the video yet, please do यार. मतलब 1 hour plus से we are doing this. It's a अर्नब का भी weekday, नकल and Nidhi has just finished his work call and he's come over. He was sending emails while we were doing this live. So please do like the video if you appreciate the efforts that अर्नब का भी नकल किया मैंने. Arnab का भी नकल किया. If you appreciate the efforts that me and Nidhi put forward, यार, really appreciate it, guys. निधि खत्म करते हैं भाई. अभी भूख भी लग रही है मेरे को बहुत. कोई बोल रहा है ग्लेजर्स आउट स्टार्ट हो गया. ग्लेजर्स आउट, हम क्या करें भाई. बट यस, चलो भाई लोग, फिर मिलते हैं. वी विल, ये थोड़ा हम लोग हेल्टर स्केल्टर थे बिकॉज ऑफ अस ट्राइंग टू रीड अ लॉट ऑफ स्टफ. बट Yeah, या, but इट वाज I अ गुड think it was a स्ट्रीम. good stream, Nidhi. It was a good live for us. 100%. ऑल राइट. Look, चलो भाई, सी looks यू. like मैं भी looks अभी like looks like Darwin Nunez is going to be a Liverpool player. If it happens, it would be great. Uh, if it does happen, we'll go live again, guys. Until then, up the Reds.